36 दिन बाद शनिवार को जंतर मंतर पर चल रहा छात्रों का आंदोलन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद खत्म हो गया। लेकिन अब सवाल संसद को लेकर है, क्योंकि अब तक संसद में पेपर लीक को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। तमाम विपक्षी पार्टियां धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर संसद में विरोध करती नजर आईं, मार्च निकालती दिखी। लेकिन अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय कैबिनेट मंत्री प्रहलाद जोशी को देश का नया शिक्षा मंत्री नियुक्त कर दिया गया है। सवाल है कि अब कल से संसद की तस्वीर क्या बदलेगी? क्या अब संसद में कार्रवाई सामान्य हो जाएगी? क्योंकि पिछले कुछ घंटों में मोदी सरकार पेपर लीक के खिलाफ तगड़े एक्शन में दिख रही है। पेपर लीक और परीक्षा में धांधली पर सख्ती बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार कल लोकसभा में नया संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। हालांकि देखना होगा कि मॉनसून सत्र का सोमवार कैसा रहने वाला है। देश के युवाओं का प्रदर्शन और उस पर मचे सियासी घमासान के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। बीते कुछ दिनों से देश की राजनीति में काफी उथल-पुथल देखने को मिली। विपक्षी हमलों और देशव्यापी छात्र प्रदर्शनों के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने NDTV के मंच से इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि हर पीढ़ी युवावस्था में अपनी आवाज उठाती है और विरोध करती है, और सरकार ने उनकी आवाज को कभी दबाने की कोशिश नहीं की। Give the respect to the protest. We have not stopped them from protesting. The permission was given when they came. The person who came, Dipke, who had come, was given the permission even as he landed. We didn't try at any point in time to stop the protest at all. And therefore, I think equally, when things didn't go right at the first time when the exams were held and leak became public and it had to be acted upon, soon the government arrested those who had, bought and sold the papers and so on. It was the responsibility of the government. निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट के री एग्जाम के नतीजे आने के बाद इस्तीफे की पेशकश करके समझदारी भरा फैसला लिया। But equally, it was the responsibility of the government to make sure the re-examination happens in time. Students get their result in time so that their one whole year's calendar does not get affected. And I think that bit was, together with everybody, the education minister, Dharmendra Pradhan, handled that. And after having completed that re-examination process, announcing the results so that students don't lose a year, it's when then he took a call, wise call, that he will put in his papers. If he hadn't done that, meaning if the re-examination hadn't happened in time, it would have been irresponsible of everybody in the system. We had to do that for the students, and that was done. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि सरकार को जेन ज़ी की भाषा में बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी संदेश बहुत अनौपचारिक नहीं हो सकते, क्योंकि सरकार के हर बयान को अदालत में परखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि बयानों में स्पष्टता के साथ साथ कानूनी नजरिए से सटीकता का भी ध्यान रखना चाहिए और कानूनी दायरे में रहना चाहिए। How do you see the government and yourself respond to this Instagram reel, the meme, the Gen Z, the vocabulary of protest? How does communication and governance, in your view, change on the back of what we've seen in the past one? What's the message that's been registered with you and with those in government? Now, how does it change is the question. But how are we going to change is the answer that I have to work. All of us will have to work. Because the communication in their language, meaning it's a language which I would think is easy for them to understand, not too much of a verbose language, not too much bureaucratic language. And therefore, it is important for government to see how far it can go in communicating in that language. Because when government speaks or government language is always subject to everything which is legal scrutiny. You can't say something which sounds ambiguous or light-hearted that you go, to the courts interpreting it. Government by itself has a limitation.
Your language will have to be the language which will be tested in the courts. You really cannot, therefore, become so easy with your language and put yourself to question.